Hello everyone, my name is Preeti Gupta and today we'll discuss topics also, another tutorials also, okay? So let us start. I am sharing my screen. Wait for a minute, okay? Just a minute. Okay, just open my yes. So today motivation is if you can dream it, we can do it. Okay. It's a very motivational, quite keep it in mind and move to the point, okay? So today topic is encapsulations. Okay. So, Java encapsulation, I already said Java have four main pillars, okay? And four main pillars are for which one? Which one is first one is encapsulation, which most importance in Java. Oops, means object oriented, okay? So, let's discuss about encapsulation. What is encapsulations? So, encapsulation means we can just show that sensitive data hidden from the users. Okay, just like we can in coding language, we can say that declare class variable yeah attribute as a private means um if your variables, if your attribute, if your functions, okay, they both are private. Okay, then we can't other user can't see your data like attribute variables. Okay, we when you are create your variables and we just variables as a private, then other user can't see your data. Okay, so this is the real example of coding language. You can say that encapsulation. Like encapsulation means when sensitive data, this data is important and we can hide this data, then we can just encode language. We can use on as a private. Okay, so like that. So we can see provide public, get, and set. I already mentioned that a getter and setter is basically getter means read the data, set means when we have set the data on the memory. Okay, so access the update on the private. If you are there private, then uh, uh update as a private variables. Like if you are get your getter method, these both method if you are private, so we can't change their data. Like we can't like set like my name's like Preeti. Okay, we can change my name for this method set another, then we can't change, we can't allow for this code. Okay, so basically like that. We learned from the previous chapter like private variables. Already mentioned that what is private variables. Okay, and can be accessed within the same class as outside the class, no access to it. However, it is possible to access them if you are provided. Okay, public getter and set method. Then this method runs from the variables value, and the set method set the values. Okay. Syntax from both, they start from either get or set, followed by the name of the variable within the first letter in uppercase. Okay. So this is all we'll discuss about getter and setter method. And encapsulation of few our discussion of encapsulation is simple example like when we are sensitive data are hidden, these stamps we can use in encapsulations. Got it? Okay. Okay, move to the another point. Okay. Let's say we discuss some example. Okay, so we can see that a public class person. Okay, class name is person. Okay, then we just private our attribute. This is the attribute. Name is which name is a string. Data types a string. Name data types name is name. Okay, and then I use some get method means getter method. This is a get method and just uses their name. Okay, and then return the name. This name will be returned or this is called as
And when we are setter, we can set the value like we can, if you are not there, then we can just set their value, their new name, a string, that new name we can just pass the agreement. And this is the reference, but this variable is called a reference. When we are this keyboard, this is called a we can reference their value on this name. Okay, so this is basically called this. We can already, I mentioned that, explain this example like this get method return the value of the variable name. Okay, this get method is basically get the value. Simple. Like get the value, read the value. Like compiler just read and just get, receive their value. No. And setter method basically we can use the set the value. If we are our memory is empty, if our object is empty, then we just insert their value. This is called the set method. Okay, take method, and we can just syntax like we can just because why we use parameter, because if you are not using any parameter, how can compile do, okay, which types of value we can set that, then this is called a compiler. Okay, this is a strings type, that's why we can use in a string. Okay, and their string type name, and there this name reference number we can insert on this value, new name. Okay, so assign it to it means insert to it. Okay, and this keyword is used to refer to the current object. This keyword is this that name is refer to the current object. Okay, have you got it? Yes, I hope so. We got this point. This is not a logic sense, I think so. Okay, yes, move to the point. If you are any doubt, then please ping on comment, and I see your all the doubt, and I will try to solve your issues, problems, code, anything. Please comment on your box, and please like, subscribe our channels. Okay. Okay. So we can see that this is the example of this example. Okay. This is the example public static void main. Inside the main method, we can just use some create object with it using new keyword. Okay, and just using dot order we can access their value and the error. Why this error? Because in the previous code we can see that our attribute is a private, right? If our attribute is private, we can't access the value, right? So if you are private, then other user like this user, the other user, right? This other user they can't access their values, attribute value. So that's why we get a error. Okay, if you are not any get any still confused, then we can go to the example. I think we solve your issues. Okay, just a minute. Yeah, uh, see. No, no. See, first name is person.java. Okay, right? First file name is person.java. Inside file I use in private. Okay, and then I use in getter method. This is called a getter method, which I just return a name. Getter method basically used for read the data means get the data. Okay, setter method means set the data. Simple, setter. Just नाम से ही लग रहा है कि सेट करना है. गेटर मीन्स गेट करना है, मतलब रिसीव करना है, राइट? सो गेटर मीन्स, सेटर मीन्स इंसर्ट द डाटा. ओके, तो हमने क्या किया, दिस स्टेप नेम में, न्यू नेम में, न्यू रेफरेंस में उसमें क्या क्या वैल्यू क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया. ठीक है, हमको ये डाटा को मैंने क्या किया है, ये माई डॉट क्लास ने इसको क्या किया, एक्सेस करने की जरूरत थी. नेम को, नेम में क्या किया, वैल्यू को क्या कर दिया, सेट कर दिया. माई डॉट नेम ऑब्जेक्ट, किस किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है. देख रहे हो, लेकिन एक्सेस क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज सी एरर इज नेम हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन.
हैव यू सीन? यस। सो हमने क्या सीखा? अगर हमारा एट्रीब्यूट प्राइवेट हो यूजिंग गेटर मेथड, तो हमने ये भी सीखा कि अगर हम कोई वैल्यू को गेट करना है, सेट करना है, तो हम क्या करेंगे? गेट एंड सेटर मेथड का यूज करेंगे। ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ओप्स। ओके, सो इनकैप्सुलेशन में हमने क्या पढ़ा? इनकैप्सुलेशन में बोला कोई भी हमारा डाटा अगर सेंसिटिव है, हमको उसको दिखाना नहीं है, पब्लिक नहीं करना है, तो हमको उसको क्या कर दो? प्राइवेट कर दो, कि हमको अदर यूजर उसकी वैल्यू क्या करे? एक्सेस नहीं कर दे। अब देखो, ये यूजर वन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यूजर वन है, ठीक है, और यूजर टू ने क्या किया? इसके वैल्यू को क्या कर दिया? एक्सेस करने की जरूरत की, मीन्स उसके वैल्यू को सेट करने की जरूरत की, मतलब चेंज करने की जरूरत की। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अकाउंट में आपने लॉग इन किया, राइट? आपने अकाउंट का पहले अकाउंट बनाया, फिर उसमें पासवर्ड डाला, ईमेल डाला, राइट? एंड आपने फिर लॉग इन, उसके पासवर्ड आपके पास ही है, राइट? अगर वो पासवर्ड पासवर्ड क्या है? प्राइवेट है। बिकॉज अगर पासवर्ड पब्लिक हो जाता तो कोई भी आपका अकाउंट या कोई भी जीमेल, कुछ भी, एनीथिंग, वो क्या होता? पब्लिक हो जाता, तो कोई भी आपका, लाइक फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट का पिन नंबर प्राइवेट है, तभी आप आपका है तो आप ही खोल सकते हो, राइट? वी कांट, लाइक पब्लिक रहेगा तो ऑल ओवर पब्लिक नहीं खोल सकते, पीपल नहीं खोल सकते, लाइक वी नो दैट कि ओके, आपके पास है तो आप ही खोल सकते हो, आप ही ओपन कर सकते हो यूजिंग पिन, राइट? तो वही है कि इस इनकैप्सुलेशन का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट में हम पिन, जैसे एटीएम में जो आते हैं, तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो अपना खुद का एटीएम ले जाओ, पिन नंबर डालो, फिर मैं क्या कैशबैक रिसीव होती है, राइट? अगर मैं किसी और का ले जाऊंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारा एटीएम चोरी कर लिया, राइट? और उसने जाके बैंक अकाउंट में जाके और पैसा निकालने की कोशिश की, बट उसके पास पिन नंबर है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा, राइट? तो वही है, विद द हेल्प ऑफ पिन। तो पिन क्या होगा? एक प्राइवेट डाटा हो गया, जो कि यूजर के पास ही होगा, जो पब्लिक नहीं हो सकता। इस वजह इनकैप्सुलेशन का यूज होती है, ठीक है? इनकैप्सुलेशन का यूज इसलिए होती है क्योंकि हमें वो अपने कोई सेंसिटिव डाटा, लाइक पिन, पिन एक क्या हुआ? सेंसिटिव डाटा हुआ, जो हम क्या कर सकते हैं? वो हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो सेंसिटिव डाटा, उसको हम हाइड करना है। हाइड करने के लिए क्या करेंगे? इनकैप्सुलेशन का यूज करेंगे, सिंपल, ठीक है, कि दूसरा यूजर उसका क्या करे? यूज ना कर सके। आई होप सो, मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको दे दी, तो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। ओह सॉरी, एक्चुअली, यस। सो हमने क्या बताया? बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, उसका गेटर सेटर मेथड क्यों होता है, गेटर मेथड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डाटा को अगर मुझे गेट करना हो तो गेट मेथड का यूज करेंगे यूजिंग नेम। सेट मेथड का यूज करना हो तो मुझे कोई बार डाटा को अगर सेट करना हो तो जिन पैरामीटर हमको, कोई पैरामीटर अगर इंटीजर नंबर का हो या स्ट्रिंग का हो, वो पैरामीटर मुझे क्या करना होगा? पास करना होगा, ठीक है? यूजिंग कीवर्ड हमको उसके डाटा क्या करेंगे? रेफरेंस करना, सिंपल। और दिस इज द एग्जाम्पल, एंड मैंने सो कुछ की पॉइंट मैंने यूज करा है। तो वाई encapsulation is used? Okay, so let's see why encapsulation better control of class attribute and method in coding language, but encapsulation real life example like for a better security. Okay, कि हम मेरा कोई डाटा ले ना सके, सेंसिटिव डाटा को हम कैसे हाइड कर सके, इस वजह से हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं फॉर इन कोडिंग लैंग्वेज। Just better control of class attribution and method. Okay, class attribute can made be read only if you only use, I already said that class attribute can means that get method, and write only if you set method. Read only means if you are data, just read them. मतलब get the data, like which data I just see. Okay, this is means read only, and write only means their data will be set, means this is called a set method. Okay,
Flexible means the programmer can change one part of the code without affecting the other part. Okay. And increase security of data. डाटा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ डाटा क्या कर इंक्रीज करता है, मीन्स अदर यूजर उसे क्या कर सके, यूज ना कर सके. सो इतना ही आज के लिए. कल मैं अनोदर पिलर्स के साथ आऊंगी, अनोदर उप्स के अनोदर एट्रीब्यूट के साथ आऊंगी. सो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. एंड कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट ऑन बिलो एंड आई विल सॉल्व योर इश्यूज. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.